So, if you're interested to participate in international seminar related to artificial intelligence, then please see this video. It might be helpful to you. So, namaste and welcome to Simple Education. आप Google पे type करिए Central University of Nagaland and you will get this link. Click on this link. As soon as we click on this link, we are on this Central University of Nagaland's complete website. अब website को थोड़ा सा आप scroll करिए. So let us scroll the website a little so that we get that particular international seminar details. So यहाँ पे आने के बाद आप देखिए ये categories आ गया है towards the left hand side. Under the categories events जो यहाँ पे लिखा है उस पर click कर दीजिए and all these events are organized by this particular university. आप other events भी देख सकते हैं. We are on this international seminar and workshop on artificial intelligence for green sustenance. इस पे क्लिक कर दीजिए एंड एज सुन एज वी क्लिक वी आर गेटिंग दिस एरिया और यहाँ से हम जाएंगे इसके फ्लायर पे. तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर दीजिए एंड नाउ व्हेन वी क्लिक ऑन व्यू वी आर गेटिंग दिस फ्लायर ऑफ दिस 2 day इंटरनेशनल सेमिनार कम वर्कशॉप on artificial intelligence for green sustenance, collating agriculture, environmental, humanities and pedagogy. So ये सारे अलग अलग different fields को एक साथ लेके आ रहे हैं इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल सेमिनार में. डेट है फ्रॉम 10th एंड 11th, दैट इज 10th एंड 11th अगस्त 2026 को होने वाला है. वेन्यू है नागालैंड यूनिवर्सिटी कोहिमा कैंपस और इट इज हाइब्रिड मोड, दैट इज आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं एज वेल एज ऑफलाइन भी वहां पे जाके अटेंड कर सकते हैं. आई होप टिल हियर इट इज क्लियर. दीज आर द डिटेल्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेंबर्स. And yes, these are the few sub themes, different field wise. So science and technology के लिए ये सारे sub themes लिखे हुए हैं, humanities के लिए ये sub themes हैं and education के लिए ये sub theme है. So accordingly, if you are interested, you can prepare your paper in these areas for participating in this international seminar. Now coming to the registration and abstract submission, आपको 31st July 2026 तक या उससे पहले आपका abstract submit कर देना है. And yes, these are the different registration fees. As per your category, you need to fill the registration. You need to pay the registration fee. I hope till here it is all right. Coming to the other aspect of this, these are the details related to registration fee payment. तो ये आप कैसे पे करेंगे? By using this QR scan कर सकते हैं. Otherwise, you are getting all these details. You can pay through this. Fine. Now, if you have any query, these are the email addresses. You can just contact them. Accommodations related यहाँ पे लिखा है can be arranged on paid basis for interested participants. And direction to Kohima campus if you are going for an offline seminar, तो ये सारा डिटेल्स दे रखा है which might be helpful to you if you are going and presenting your paper over there. I hope till here it is all right. ऑल्सो कॉन्टैक्ट नंबर इज रिटन ओवर हियर, यहाँ पे से भी आप पे कर सकते हैं. कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज आप एब्स्ट्रैक्ट सबमिट कर दीजिए 31st या 31st जुलाई से पहले एंड दिस इज द ईमेल एड्रेस वेयर यू कैन सबमिट योर एब्स्ट्रैक्ट आई सपोज. फाइन. सो दीज आर द डिटेल्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर national international seminar on artificial intelligence for green sustenance, collating agriculture, environmental humanities and pedagogies. I hope this is all right and you're going to participate. Do share this information to any other friends, colleagues who are interested and who wish to participate in this international seminar. So that's all from my side. Thank you and namaskar.